Here is the hottest show in town. You are tuned into Coffee with Jalal. या अली मुन सत आदाब एंड सलाम अलैकुम। मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब देख रहे हैं इफ यू आर लिसनिंग स्पेशल और यू कैन से स्पेशल एडिशन ऑफ कॉफी विद जलाल विद योर होस्ट जलाल लारक। इट्स बीन 2 weeks now. Yes, it's been 2 weeks जब से हमारी अपना मुलाकात हुई है। Yes, just took a little bit break. I think it was necessary to get some energy back and bring some new ideas, get some new artists. So here we are. Here I am in your अपना presence, अपना back with the new edition of Coffee with Jalal. अपना सबसे पहले हमारे जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, हमारे बहन भाई एंड हमारे इंडियन बहन भाई, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको जैसे पता है कि 14 अगस्त was for the Pakistan and now today इट्स इंडियन इंडिपेंडेंस डे। तो हमारे सुनने वाले, देखने वाले और अब जो बाद में देखेंगे, सो जो हमारे बहन भाई इंडिया और पाकिस्तान से, सो ऑल ऑफ यू, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस, वी आर व्हाट इज इट, आई थिंक अबाउट 73-74 years old now since 1947. So yeah, I think जो है 73 years old now, mashallah. And I'm sure जो है all of us are proud. Doesn't matter where we live now, लेकिन वी आर ऑल पार्ट ऑफ आवर बैक होम। और अगर आप पाकिस्तान से है या तो इंडिया से है या तो आप किसी भी कंट्री से हैं, यू आर पार्ट ऑफ योर ओन मट्टी, जिसको कहते हैं ना, कि जो हमारे अपना जिस्म जान में है। तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द स्पेशल एडिशन ऑफ कॉफी विद जलाल। लास्ट 2 week में ऑफकोर्स हमारी ईद भी आई थी, तो जो है आप सबको ईद मुबारक, आपकी और आपकी फैमिली को, from all of us, from जो Koffee Jalal and ये सलाम नंबर कैलगरी पंजाबी नेशनल, जो हमारा टीवी का जो हमारा फ्लैगशिप स्टेशन है, तो आप सबको ईद मुबारक एज वेल। इसमें 11 जुलाई की खुशहाल खैर, आई मीन दैट्स टू पार्ट नाउ। नो, तो वो कल 2 हफ्ते में गया था, 2 महीने के लिए तो नहीं गया था। तो एनीवेज, सो या हैप्पी टू बी बैक एंड इंशाल्लाह will continue our this journey for long time इंशाल्लाह। तो अभी हम जिससे बात कर रहे थे कि जो है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो इसलिए आज का हमारा जो गेस्ट है, he's from Pakistan as well. This is my first time I'm gonna meet him or I'm gonna see him virtually. So ये जो pandemic, I think it started what about March. तो इसमें एक फायदा हुआ है हमारे जो हमारे आर्टिस्ट है, म्यूजिक है, कंपोजर्स हैं, या तो जो है परफॉर्मर्स है, जो भी है, डांसर्स हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी किस्म का भी आर्टिस्ट हो, इससे एक बात का देयर इज वन जो है पॉजिटिव फॉर श्योर। नाउ वी नो लॉट ऑफ अवर स्माइली बहन भाई, और डजंट मैटर इफ यू आर मुस्लिम, इंडियन फ्रेंड्स एज वेल, डजंट मैटर, जो भी आर्टिस्ट है दुनिया के किसी भी कोने से, इससे ये एक फायदा हुआ है कि नाउ वी नो देम थैंक्स टू फेसबुक एंड सोशल मीडिया। सो देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, दे आर ऑनलाइन राइट नाउ, जिसको हमें देखने का मौका मिलता है फर्स्ट टाइम, जिसको हम पहले जानते भी नहीं थे। एंड आई थिंक इफ आई जस्ट ब्रिंग इट टू जो स्पेसिफिकली जो हमारी स्माइली कम्युनिटी के हैं, उन्होंने द वे दे आर ब्रिंगिंग ऑल आवर आर्टिस्ट टुगेदर, इट्स फिनोमिनल। नाउ वी नो हमारे मोर आर्टिस्ट, द वन हु लिव्स इन पाकिस्तान और सीरिया और तजिकिस्तान और ईस्ट अफ्रीका। टॉकिंग ऑफ ईस्ट अफ्रीका, नेक्स्ट शो जो नेक्स्ट सैटरडे होगा, विल हैव आर्टिस्ट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, सो जस्ट कीप इन माइंड। और अगर पाकिस्तान से, इंडिया से है, जैसे हमारे जो जिशान अली आए थे, या तो ऑस्ट्रेलिया से फरहान शाह जो हमारे शो पे आए थे, एंड ऑफ कोर्स कैनेडियन एंड यूएस आर्टिस्ट वो आते रहते हैं। सो एटलीस्ट वी गेट टू नो देम मोर नाउ कि वो क्या है, क्या करते हैं। And of course, one of our good friend Nafisa Dalwani as well from UK. So no, as you know, she's a Garba queen. So she does so many shows now. So ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमें जो अलग अलग आर्टिस्ट को देखने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है, and then we get a chance to bring them on our show as well. And it's very honor for us to, they never say no. They always love to come to on our show. Either it's a Coffee Jalal or either it's Salam Namaste Calgary. So it's an honor again to have my next guest, or like today's guest, all the way from Karachi, Pakistan. He's live right now and he's here. Hello, Karim. Hi, Jalal. How are you? Good. How are you? Good to see you, my friend. Good to see you. Good to see you. You were out for the past couple of weeks or something? Yes, we did talk. Right?
Yeah. We did talk a couple of weeks. Then I took a couple of weeks off as well. I think I needed it. So here Right. we are, and thank you again for joining us all the way from Karachi, Pakistan. Thank you for having Uh, me. so we were just talking at, I think आपकी light चली गई. Is that right? लाइट हमारे यहाँ पे होती नहीं है, ये हमारा कौमी मसला है। आज से नहीं, जब से आजाद हुए हैं तब से ही मसले हैं ये सारे। Yes, yes. लाइट के बगैर ही चलते रहते हैं हर वक्त, सारे काम Yeah. ऐसे होते हैं। No, yeah, when I was in Pakistan, it was the same thing. We used to do a light chali and load shedding. That time they used to say, and I think it's still going on. Yeah. So Karim bhai, like Karim Barolia, tell us about yourself. I don't know you at all. I'm sorry, and I think there are a bunch of people they don't know Karim. So who's Karim? Okay, so बड़ी अजीब सी बात है कि खुद अपने आप को खुद से डिस्क्राइब करें, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बट थोड़ी कोशिश की जा सकती है। So basically, I am a music producer, composer. I have studied productions and recording arts, and I've been into performing arts. I do a lot of things, but which is related to music. I do a lot of experimental work, sometimes into sound healing as well. So many things, but it's all related to music. But I've been in this field for the past, I think, 12 years, over 12 years. Wow. I think more than 12 years. I can't even remember. Yeah. But yeah, but if you talk about like being in the scene and in the business, it's been like quite a while now. But when I started, I was very young. But then सीखते गए, फिर सिलसिला चलता गया, क्योंकि I think सीखना बहुत ज़रूरी होता है. So that's why Yes. I wanted to make my own songs. So that's why I actually ended up going to a school to study recording arts. Okay. So that I can actually record my own song, produce my own songs, and do the Wow. engineering and all that. So पूरी एक जर्नी है, वो चलते गई, तो बस इस तरह से चीजें होती रही हैं और Yeah. आगे भी होती रहेंगी. Yes, inshallah. So you like why music? Do you have any family kind of any अपने No. family में कोई था music में कोई? No one. I'm the first one, and शुरू में तो यही होता है कि काफी जो है वो बैकलैश होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी लाइक सोसाइटी है, स्पेशली कल्चर जो है पाकिस्तान का भी, तो वो यही है कि यहाँ पे म्यूजिक को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता. Yes. और काफ़ी ज़्यादा आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है सोसाइटी Yes. से भी, फैमिली से भी, कि आपने ये इसमें करियर परस्यू करना है, because it's not easy. It's not easy. Yes. And sustaining and having a career in music, it's not easy, especially country like Pakistan. But a lot of people are doing it for the love of art. So I think it's great, and we need that. Yes. Because आजकल के दौर में आर्ट जो है वो पीस क्रिएट करता है. एक बहुत मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात शेयर की थी मुझसे कि जो है हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली जो हमारा जो यहाँ का जो ईस्ट का जो कल्चर है, उसमें यही होता है कि पेरेंट्स हमेशा जो है वो बच्चों को फोर्स करेंगे कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है. Yes. और आप इस आर्ट नहीं कर सकते हो, आर्ट के लिए अगेंस्ट करते हैं. बट जब वो रिलैक्स होना होता है तो वो खुद ही म्यूजिक सुनते हैं, या किसी म्यूजियम में जाते हैं, या पेंटिंग्स बाय करते हैं. तो व्हाई नॉट, थोड़ा सा ये है. आई थिंक वो वक्त के साथ साथ चीजें शायद बेहतर हो जाएं हमारे माशरे में भी, बट एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है. और आई थिंक उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जो कि आप मेरे ख्याल से कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है. हाँ, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज अवेयरनेस अगर चीजों की नहीं होगी तो फिर चीजें कैसे काम आएंगी. बिल्कुल. Yeah. So this music, because we say that music has no boundaries, music has no religion, music doesn't have any color. Do you believe in that? Absolutely. I can give you an example. So for the Imamat Day song, like we had to actually speak with 25 different countries, right? And अब 25 अलग-अलग countries के लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है, उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है. So like there, and we always had a translator for Arabs, and for Syria, and for Iran, and for Tajikistan. So, but some of the time, I remember there was this time that I wanted to speak to the singer, and then I wanted to explain to him a couple of things, that this is what he's supposed to sing. And I just called him without anyone, because मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि ये फटाफट मैं उसे बता दूँ. तो
से बस मैंने कॉल कर लिया और उसे मैंने इशारों से ही बस समझा दिया सारा कि ऐसे ऐसे आपने गाना है, and we jammed it on the WhatsApp call, and that's it. It works without knowing the language, because I think music has that power to actually move you towards it, and you don't need to have you don't need to speak the same language. You can understand it basically. It's just amazing. Yeah. So, if I take you 10 years back, at least minimum 10 years back, that time we didn't have the social media that big. We didn't have the WhatsApp. We didn't have the Facebook call. It was hard to connect with any artist, any person on the other side of the world. Now it's so easy now, So me and you, we just connect on a phone through the Facebook, and here we are. So now of course, so now because of the lockdown, now I think जो artists हैं or composers, like the music director, movie director, they're learning so much. They're doing so many things online now on a WhatsApp call or here and there. I think there are so many things that are happening behind the scene. So how do you feel about it? Yeah. I think it's great. It has actually created room for so many people to shine actually. And पहले ये होता था ना कि बस मखसूस लोग होते थे, वही काम करते थे, और अब चूंकि आपके हाथ में फोन है, बस आपने फोन उठाया, आप लाइव चले गए, आपने कोई भी बात शेयर कर दी, कुछ अपना आर्ट स्किल दिखा दिया, और वो लोगों को समझ आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बस फिर आगे निकल जाती हैं चीजें इस तरह, एंड यही होता है। और आई थिंक ये पेंडेमिक जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो I think it's a blessing. You have to look at the other perspective as well, right? Yeah. So you have to look at that way. So I think वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने इससे सीखा है, और आपके पास इतना सारा टाइम है स्किल्स को डेवलप करने के लिए, नई चीजें लर्न करने के लिए। मैंने इस दौरान इतनी सारी चीजें सीख ली अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। और लाइक द वे पीपल आर कोलैबोरेटिंग ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। Yes. So I think it's great. You just have to use the technology properly. तो वो कोई भी चीज का नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, तो आपने किस तरह से जो है वो उस चीज को लेके चलना है, वो आपने देखना है, I guess. Right, yeah. Okay, yeah, Karim, did you get a chance to watch our Future Superstar, the one we did? I watched few bits of it, and I really liked it. I think I commented. I think I passed my comment to you as well about the violinist. Yes, you did. Yeah. And I think these kids are amazing. I think और मजे की बात है कि जब हम इतने छोटे होते थे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता था, कोई बताने वाला नहीं होता था, कोई कुछ लाइक YouTube नहीं होता था कि कहीं से जाके सीख ले बंदा कुछ, and learn ले। और प्लस अगेन कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी, वहाँ पे तो ये चीज़ें होती नहीं थी। तो अब जिस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है इन चीज़ों को, एंड जितना जल्दी आई थिंक आप लर्न करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। I mean, there is no age for learning. That's another thing. That's a philosophical thing. But I think the early you start, I think you can excel quickly, because बहुत competitive है दुनिया, and you just don't have to be. You have to be smart. You have to be skillful. You have to have a right approach for the things. So I think these kids are doing an amazing job, और बहुत जल्दी इन्होंने शुरू कर दिया है। Like the reason I mentioned that, because some of the kids, they have their own YouTube channel already. Wow. And I'm surprised, like, wow, they are so advanced already. And I think this is a great thing. As you said, it's so much competition outside, and you want to be ahead of the game already, right? And inshallah, because you did your song, the one we were talking a bit, with the kids and everything. Then of course the video ever show. And speaking of a future superstar guy, so future superstar key news very soon is coming. One of the big news coming very soon. So stay tuned. It's about the next show. So stay tuned for the news. Inshallah, in a week or two, we'll have a big announcement coming up. So this pandemic, as I was saying in the beginning, it brings a lot of artists together now. Now we know how many artists do we have on the other side of the world, from Pakistan, India, US, Canada, everywhere now. Yeah. So फिर as a composer, as a music director, तो इसमें करीम बरोलिया का क्या फायदा है? मेरा फायदा ये है कि I got to know a lot of people.
I got to know a lot of talented artists from all around the world, and I always knew and had a feeling that in our community we have so much of talent, Yeah, and but I never had the opportunity to actually work with those people. So I think it's just great. I think it's totally great, and so ये फायदा हुआ मेरा तो यही फायदा हुआ कि I met so many people. I met so many people yes, from yeah, different countries, and now they have worked with me, and they, like, we had a good connection, and also especially like with Iran, like I had a good time with them, with the people, with the musicians over there, and they said कि जैसे ही pandemic खत्म होगा तो the first place I'm going is going to be Iran, and we'll do something, we'll do a collaboration, we'll do create a project or something, and there are a few things which I'm working on as well. So let's see. So I think that's a great thing, and इसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारा टैलेंट सामने भी आया, एंड आई थिंक ये सबसे ज़रूरी है कि जितना भी टैलेंट है उसको आप किसी तरीके से शोकेस करें, चाहे आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा हो, yeah, एंड कम्युनिटी में जो है वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी हम जानते भी नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि you focus more towards on the US and the Canada side, right? yeah, But yeah, there are so many other countries, and ऐसे बहुत सारी और भी जगह हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होगा, बट वहां पे true, कोई एक बंदा होगा, वो अमेजिंग कोई म्यूजिशियन होगा जिसने पिछले अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी होगी म्यूजिक करते yes, करते, बट yeah, we don't know about him or her. yeah, 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 yeah. So I think I'm always searching for those kind of people Mm-hmm. जो कि जो कि बहुत ही अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो और पैशनेट हो, एंड उनके साथ कोलैबोरेशन करने में भी मजा आता है, एंड हाँ, तो बस इस तरह से ही ये सिलसिला आई थिंक चलते रहना चाहिए. सो कोलैबोरेशन शुड नॉट स्टॉप, इट Should not शुड कीप stop. ऑन Yeah. गोइंग. Yeah, yeah. Okay, guys, there are so many people are watching, including, I'll just say a few names in it. Zenobia, Suleiman, Fatima Manji. Oh, Fatima Manji, I think you know her from East Yeah, Africa, from Tanzania, I she believe. Yes, she yes, was on. she was part of the song. Yeah, Hussein Langara, one of my cousin in Karachi, and Mhm. Farida from US, and then Amiruddin, Dilshad from Karachi as well, Nuri, Karima, Shalina, Arif, Asif, Naseem, Gulzar, Nerm. Hello, Nermin. Gulwars Haji just joined. Shuli Sharma, and as we do on our every show, please contribute to AKDN Global Pandemic Relief Fund, and link is right here in our comment section. So thank you so much, Norman, for posting that. So guys, if you can donate or contribute anything, $1, $5, or 100 rupees, whatever. So it's gonna 100% of your contribution will go to the people in need, like our brothers sisters on the other side of the world. So please do whatever you can. So Karim bhai, now I'll take you back. Diamond Jubilee song, the one Salim Suleiman released. It was 2017 June 1st. Yeah, When he released that song, then I think it was kind of the new for all of us. There were like a yeah. 70 artists from all around the world. Hmm. फिर वो song के बाद I think a lot of things change. A lot of songs are coming now with Yeah, all different artists. Now I think we got an idea. Okay, I think we can do that as well. yeah. So do you think, is that right? Everything started from that song, you think? I think collaborations have, like, they used to happen in the past as well, Yeah. but I think again जो अब जिस तरह से social media and connectivity बढ़ गई है, so I think things Mhm. are much more easier and convenient. Yeah. So if you imagine like happening the Diamond Jubilee song back Yeah. in back in the time of Golden Jubilee, it wouldn't have been Yeah. possible. No. So maybe it would have been possible because I think the Yeah. connectivity was still there, but I think इतना उस तरह से advanced level पे नहीं होता. नहीं So I होता है. think with time and technology things are moving and fast, and I think जब आप एक चीज initiate करते हैं, तो Mhm. जब आप पहला एक पिलर रख देते हैं तो फिर automatically people come to fill in, and then they just move on with that and they keep on doing things with it. So you Right. need to have a start. You need to have a start from somewhere. So I think बहुत सारे बहुत सारे स्माइली आर्टिस्ट जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो encouragement मिलती है इस तरह की चीज़ें देखकर, and even Yes. like Yes. after Maula Mera Ish too, like I got Yeah. so many messages, and I'm thankful to everyone, whoever has messaged me, and whoever has felt the connection with the song,
and a lot of people, they messaged me and they wanted to collaborate with me. So I think it just triggers them, that they want to do something, I think, which is a great thing, because you need that sort of an encouragement, you need that sort of a passion to do some things. So ये वक्त के साथ साथ और बढ़ता जाएगा, आई एम श्योर, और बढ़ता और जाएगा. जिस तरह कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, उस तरह से ये चीजें बढ़ती जाएगी. बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं होगा, अगर मैं एक ऐसी जगह पे जाके चले जाऊं जहाँ पे मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है, तो फिर इस तरह कोलैबोरेशंस तो शायद नहीं होंगी. इसलिए यू हैव टू बी सारी चीजें. Yeah, so of course, so you are जो प्रोडक्शन भी करते हो, कंपोजर भी हो, अपने लिखते भी हो और अपने गाते भी हो. What is your best part or what is the easiest part? Like, I don't think anything is easy. लेकिन the one you say, okay, yeah, I can do this just like that. तो उसमें क्या लगता है आपको? I think म्यूजिक बनाना जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया है. मुझे ऐसा लगता है कि आसान हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा आता है, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूँगा, और ना ही मैं ये कहूँगा कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट. आप सारी जिंदगी गुजार लें या 10 जिंदगियां गुजार लें, तो भी आप पूरा नहीं सीख सकेंगे कभी. सही बात है. बट ये है कि हाँ, एक कमांड आपके पास एक टाइम के बाद आ जाता है, एक साउंड मैं अपनी क्रिएट कर सकता हूँ. एंड इवन फॉर मौला मेरा इश्क तू, 70% of the things were actually recorded on the phone. So wow. And if you listen to the, I mean, I would not say that I would not say that sound wise it's my best work, but I think it's a decent sounding track, like in terms of the mix and the quality wise. But 70% of the things were actually recorded on the phone. Even some of the instruments like rubab and cello and violin. So most of those things were actually recorded on the phone. But then, because you have a command, right, after some time, because when you start to know, okay, these are your tools, and you know your tools, and with the bare minimum equipment, you can actually work things out. So I think with time, I have actually got into that zone that I have that command on getting the sound out there. And but now I think I've moved on to different things, because I want to do more things. I want to study different compositions. I want to study different cultures, and because I always like to work on different. I don't work on, so okay, so this is what happens. Like, whenever I go somewhere, or if there's an interview or anything, or somebody asks me that what kind of music do you produce, so I always say that I don't produce any specific music, because generally आजकल के दौर में ये है कि एक आर्टिस्ट है, वो अपना प्रोड्यूसर भी है, ठीक है ना, और वो अपना स्टाइल का म्यूजिक बनाता है. But for me, it's totally different. I work on ideas. If you come to me, Karim, see, I have this idea. Can you do something with it? Like I have this song. Can we do something in I don't know, something like South Indian, So I would actually spend some time. I would study it, and I would get those things running, and I would make sure that I do try to get that sound. So I like to work on ideas. I don't like to work on any specific genre, because I've composed and produced so many different genres, from like folk to country to rock to big band to orchestral, and so many things basically. So it's always about the idea. It's always about the idea. And I like challenges. If you tell me कि अच्छा यार एक गाना बनाना है, so ठीक है, गाना बना लेते हैं. गाना बनाने में कौन सा मसला है, but it has to something where I can actually learn something out of it. At the end of the day, if two things, if you're not learning, if you're not growing, evolving, basically, I think there is no point of whatever you do in life. You need to learn, and you need to evolve within that capacity. So I always make sure that whatever I do, whichever project I'm doing, I want to make sure that I am learning from it, I'm evolving from it. So just because through Maula Mera Ishq Tu, when I worked with 62 other artists, I know that I can work with a bigger group, and
in short amount of time and with bare minimum resources and lots of challenges. 8 घंटे लाइट जा रही थी उन दोनों. So and किस तरीके से चीजें हुई हैं. So yeah. I think I love that part. I love to take challenges rather than के बस smoothly आपने काम कर लिया, because I think उसके बगैर जो जर्नी है आपकी, challenges अगर नहीं हो, smoothly अगर आप चल रहे हैं तो जर्नी बोरिंग हो जाती है. Very important. So, True. So let's talk about this song. You like the Mola Merish too. So whose idea was it? Like, I believe the lead, Miss Lakhani. Am I right? Nazleen. Oh, Nazleen. Sorry, Nazleen. Yeah. Okay, so basically, this is what has happened. So Nazleen, basically, she is from the Far East. She lives in Malaysia, and apparently, what happened is that I got connected with the Far East Council back in Ramzan Eid. During Ramzan Eid, they were doing a show. So they contacted me and they said that, okay, we're doing a show, and can you do a song with us? For us. I said sure, and they wanted to do another song which is going to be presented by the Far East talent. Okay. So but they also wanted to get it produced, or get them together and do a song with them. So I said sure, I'll do that. Why not? It's khidmat, and why not, because I always like to whatever knowledge I have, if I can help someone out with that, I always try to do that. So that's how it happened. So we did Dil Se. I did Dil Se with them. We did a cover of Dil Se, and it was really amazing. Thank you. It got really appreciated by a lot of community people and outside the community as well. So that's how we started, and then when we were working on Dil Se and the other things. So Nazleen, she said to me that, where were you? Who are you? Because the work ethics, and I make sure that I was talking to each and every individual and making sure that they do their parts right and all of those things. So I think work ethics से फिर हमारा सारा काम शुरू हुआ, and then इन सबसे दोस्ती हो गई, and then जैसे ही वो complete हुआ तो काफी hype हुई, और फिर उसके बाद I think फौरन ही कुछ टाइम बाद जो है वो जुलाई आ रहा था, इमामत डे आ रहा था. सो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि लेट्स डू समथिंग फॉर इमामत डे. सो I said sure, I have an idea. I actually wanted to do an a cappella with 100 voices. That's the initial idea. I just wanted to create something just with voices. So वो हमने शुरू में इस तरह से किया. फिर हमारे कुछ लोग अराउंड 25 के करीब थे इधर उधर कंट्रीज से. फिर उसके बाद वो इवेंचुअली आइडिया जो है वो बड़ा होते होते इट बिकेम द ऑफिशियल इमामत डे सॉन्ग. सो आई थिंक वो जॉइंट कोलैबोरेशन था. बट या सो बेसिकली तो अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन तो बाद में आई, पहले तो आइडिया आया कि ये करना है, सो अगेन जैसे मैंने कहा कि कॉम्पोजिशन करना और म्यूजिक बनाना, आई थिंक कॉम्पोजिशन एक बहुत ही अलग, आई थिंक वो बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है. म्यूजिक बनाना तो आसान होता है, कॉम्पोजिशन इज लाइक एन आमद, राइट? you can't forcefully do it even if you learn the tools. Like अगर मुझे 10 चीजें पता है म्यूजिक के बारे में, मैंने बैठ के बना दिया, अगर if the soul is not there, it's not going to sound right. That's my personal opinion. Different होता है. So but yeah, so I think वो शुरू में आइडिया यही था कि हमने कोलैबोरेशन करनी थी और we want to do something, so it became वो फिर बड़ा होते गया और इस तरह से फिर हमने कर लिया ये सब. Mashallah. No, because we just played that song as well. So because I see there are some artists from Canada, from Calgary as well. Our good friend Samir Remtullah was part of it. So all these artists. Did you talk to them personally? Yeah. Yeah. Oh wow. Yeah, most of them. I think 80% of them, 80 or 90% of them, I spoke to each and every individual. Wow. And back and forth काफी ज़्यादा recordings में कुछ ऊंच नीच है, कुछ parts में, कुछ lines में ऊंच नीच है. So I was making sure that I was trying to make sure that कि मैं पूरी कोशिश की कि मैं सबसे बात कर सकूं, क्योंकि इतना सारा काम था. And basically हर चीज you just have to make sure that everything is right. Right. आप पहले चेक करना है कि लोगों को गाना याद हो जाए,
फिर सब सही गा रहे हैं, रिकॉर्डिंग सही करके भेज रहे हैं, क्वालिटी Yes, yes. कंट्रोल, so many things. I think I was working 12 hours a day every day for 36 nights, and I Wow. think I spent over 450 hours, something like that, on the project. My. Like initially, because like we got the, I think with the artist and the production process took about 2 weeks, not more than that. बट बिफोर दैट उससे पहले कुछ दिन जो है वो हमारी प्री प्रोडक्शन एंड गाने फाइनलाइज हो रहा है, कॉम्पोजिशन पे काम कर रहा था मैं, लिरिक्स की एडजस्टमेंट हो रही है, चेंजेस हो रही है, स्ट्रक्चर बन रहा है, Right. आर्टिस्ट आ रहे हैं, लिस्ट बन रही है, चीज़ें हो रही है. सो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेपरेशन थी. एंड अगेन थैंक्स टू द फार ईस्ट, जो पूरी जो टीम थी उनकी, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बिकॉज उन्होंने पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ था दैट दे वुड हैव अ फॉर्म फॉर एवरीवन टू Okay. फॉर्म. इस फॉर्म वो वाला फॉर्म नहीं, फॉर्म थे कि आपने ये लिंक है, आपने इस पर सेलेक्ट करके आपने ये पार्ट सबमिट कराना है अपना ऑडियो का, ये टेक है. Okay. पूरा एक सिस्टमैटिकली था, अदरवाइज वो नहीं होता. बिकॉज अगर आप इतना रैंडम हैपेजेड आप 63 लोगों के साथ कर लें तो वो बहुत Yes. अजीब हो जाता है. सो वी क्रिएटेड अ शीट फॉर एवरीथिंग, चेक एंड बैलेंस, मेकिंग श्योर कि क्वालिटी सबकी ठीक है. ट्यूटोरियल्स बना के भेजे मैंने लोगों को कि अगर आपके पास नहीं है तो रिकॉर्ड किस तरह करना है, इक्विपमेंट है तो किस तरह रिकॉर्ड करना है. So a lengthy process, but again challenging. But Yeah. as I said, that I like doing those things because I It's think fun. that helps me to learn and evolve. And आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक सब सीख रहे हैं, आपसे भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, and you're growing together, which is great. Yeah. So, Yeah. और आर्टिस्ट को तो यही चाहिए होता है ना कि वो पैशनेटली काम करता रहे अपने काम में. True. Yeah. grow करता True. रहे. True. So जब ये song release हुआ, of course, so there was so much hype for it. लेकिन so what about your family and friends? How much proud they were with you? They were really happy. They were really happy. And initially though, like I told my friends and family that I'm not available. Please think that I'm not in this country, or I'm not, because I was just away. I was away totally. I would not talk to anyone for like days. I would not, even my family, they just, like, I live with my parents, and I would not see them. I would not sit with them or eat with them. एंड बिकॉज सुबह 7 बजे सो रहे हैं, फिर 10-11 बजे उठ के फिर काम कर रहे हैं, और फिर ये सिलसिला पूरा चल रहा है. सो आई थिंक दे हैव बीन रियली सपोर्टिव. सो उसके बगैर नहीं होता, सपोर्ट करना नहीं बहुत होता. जरूरी Yeah. है. बिकॉज जिस तरह के हम माशरे में रहते हैं, एंड प्लस इतने सारे मसले हैं, कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. Yeah. सो इस दौरान अगर आप की फैमिली का सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करता है. सो Yeah. आई Yeah. थिंक that was great. Yeah. So, in the 2016, we saw the Jubilee Games, where Hazimam or His Highness the Ayat Khan, he promoted all the artists. Of course, there were music as well. Then we see, of course, the Jubilee Arts and Jubilee Music Yeah. came, where at the time of Jubilee, like at the time of Diamond Jubilee in Portugal. So now His Highness, he's putting so much time and effort for our artists as well as our athletes. So I think, so I think for you as a music composer or singer, I think this is a candy for you now. I think you are loving in every second, whatever is like it's coming from the Eglimont, don't you? I think like as our imam, like he's been, I think he has worked for us, for not just for us, for the entire world. He's dedicated his life, and there is so much to learn every single day, and and work according to his guidance. And the way, like, his vision, you can't even I can't even start to talk about it. No, yeah, and few things, like health, and then the architecture, and now the music, and all of these things. Because we need these things. We need these things in order to sustain, because we're living in a difficult time right now, and we need something which actually sets our mood, tone us down, right? जो इतना सारा hyper society, पूरा hyper culture, and दुनिया में इतने मसले मसाइल हैं. So things like art actually helps us to
tone it down. So even like the architecture and all of that, जो इतनी सारा revival हो रहा है, even the Islamic architecture and all of that. So ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. ये मतलब और पूरी दुनिया आप देख रही है इसको कि जो जिस तरह हमारे इमाम काम कर रहे हैं, you know, for the worldwide and for all these things, I think it's just great. And even it's creating a lot of opportunities for the indigenous artists as well, not just from the community. Let's talk about outside the community. You know, there are artists, you know, who've been doing amazing things in their field, you know, architectures and musicians and so many other things. And और जिस तरह से उसे प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरह से उन चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा है और पोर्ट्रे किया जा रहा है, I think it is absolutely amazing. It's just absolutely amazing. Yeah. So, you know, like, you know, when I was going to the Jubilee Games, you know, like in Dubai 2016, then, you know, recently, then I think it was a couple of years ago, I interviewed one of our Smiley cricket from the Pakistan cricket team, female cricket team, Kainat Imtiaz. She's in Smiley. Then last, I think, month or two, I interviewed like Shafaq Hasnain, and she's a gold medalist, award winner in Pakistan, like, you know, as a trainer. So now we see in Pakistan a lot of our females are coming up now. I think there are 2 or 3 Smileys, like, you know, they are in the female cricket team, and now the Shafaq we found out, like, this is so amazing. So, you know, like, you are in Karachi, you are in Pakistan, so thoda batao ki hamare, like, how everything is coming now. Like, I think this is so great to hear these things. I think जलाल भाई बात सारी ये है कि अवेयरनेस आ गई है लोगों में ना. एंड पहले ये होता था कि एक माइंडसेट होता था कि बस पढ़ लिया, उसके बाद आपने शादी कर ली, you know, you just move on. But now I think माइंडसेट चेंज हो रहा है लोगों का, एंड और इक्वली, you know, सोसाइटी में ट्रीट किया जा रहा है, both men and women, I think, which is great because इतना टैलेंट है पाकिस्तान में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. No doubt. I think women are still fighting for their rights, and, you know, because I see a lot of my friends, you know, they want to do a lot of things, but they can't do it because of, you know, the society and but I always try to make sure कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं कोशिश करूं कि वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो जरूर करें. जरूरी नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स में हो या anything, you know, if they want to do business or if they want to do something, right, they should do it. Because होता ये है कि आप अपनी जिंदगी, आपको एक बार जिंदगी में दी है, और अगर आपने इसको गुजार दी, वो चीज़ अगर आपने नहीं की जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप करके बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आई थिंक वो फिर आगे चल के आपको एक रिग्रेट, मैं शायद नहीं कहूँगा, मगर ये होता है कि आपने शायद कर लिया होता तो आप बहुत कुछ कर जाते जिंदगी में. सो वो पहले से ही, और अब थोड़ा कल्चर भी चेंज हो रहा है, अब एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों में. अब कहते हैं कि अच्छा जी, अगर मेरी बेटी जो है वो क्रिकेटर बनना चाहती है या म्यूजिशियन बनना चाहती है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं. बट मैं चाहूंगा कि ज्यादा करें, ये ज्यादा होना, बिकॉज वी नीड दीज पीपल, वी नीड डिफरेंट, यू नो, पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड. एंड वरना हर कोई अगर जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो दुनिया में बाकी चीजें कैसे होंगी. I think it's quite amazing that, you know, how women are actually coming out and doing things, you know, not for themselves, but, you know, for the country as well, and making the country proud and everyone proud. So which is great. So Karim, you know, there is an old say कि जो है अपना हर जो क्या मर्द की कामयाबी के पीछे लड़की का हाथ होता है, फीमेल का हाथ होता है. तो करीम के पीछे किसका हाथ है सिवाय तुम्हारी मदर के? मेरे पीछे आई थिंक बहुत सारे लोगों की दुआओं का हाथ है. अच्छा, माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों की दुआओं का हाथ है. और मतलब मुझसे कोई भी पूछता है ना, जैसे अभी लाइक प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो, you know, leaders from different countries and, you know, from Jamaat, and, you know, they ask me कि मतलब, you know, what do you wish for and what do you want to do? I just pray for me, and that's it, because वही चीजें जो है, वो दुआएं जो है वो आपको आगे लेके जा सकती हैं. No doubt. बंदे की कोई औकात नहीं होती, you know, like बस बंदा सिर्फ मेहनत करता है, and you just have to dedicatedly, and, you know, आपको सही
चीजें करनी होती है। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगा, लाइक you mentioned something about, competitive, right? Yes, yeah, So the young kids, they have their channels and all of that. yeah, yeah, yeah. एक चीज मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आप कुछ भी, किसी भी फील्ड में हो आप, सही ना, तो आप ये ना सोचें कि आप किसी से compete कर रहे हैं, सही ना, कोई आप किसी के साथ आप कंपटीशन ना करें, आप अपने आप से compete करें, Yes, आप अपने आप से लड़ें yeah. और अपने आप को चैलेंजेस दें, बजाय इसके कि अगर मैं कहूंगा कि यार मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं, तो वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, वो मैं नहीं फिर है, उसके जैसा बनना चाहता हूं, सही है ना। yeah, अगर मैं देखता हूं कि यार इसके 1000 फैंस हैं और मेरे भी 1000, तो मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। सो आई थिंक yeah, ये अप्रोच सही नहीं है, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो अपने आप को एक्सेल करें, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू बिकम द बेस्ट आउट ऑफ यू, लाइक आप किसी से compete ना करें, देयर yeah, इज नो कॉम्पिटिशन म्यूजिक में और किसी भी फील्ड में, कोई कंपटीशन मैं समझता हूँ है ही नहीं, क्योंकि जिसने अगर ये सोच के किया है ना, वो शायद सक्सेस कर जाते हैं या शायद आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं स्टिल कहूंगा कि ये अप्रोच सही नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को देखना है कि आप किस तरह से बेहतर हो सकते हैं yes, और किस तरह से चीजें अच्छी कर सकते हैं और किस तरह से चेंज लेकर आ सकते हैं। yeah, और सिर्फ अपने लिए नहीं करें ना, आप अपने लिए नहीं करें, आप दूसरों के लिए भी करें। यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर जिंदगी में चल के, सो आई वुड डेफिनेटली ओपन अप अ स्कूल, yes, music school, or something which is creative, where people can come and learn and all of those things. yeah, Because that is going to be my give back to whatever yeah, I've done. So ये चीजें बहुत जरूरी, compassion होना बहुत जरूरी है। I think वो बहुत हम जरूरी है, miss कर रहे हैं। yeah. ये I think सबको मैं recommend करूंगा कि you have to be humble, you have to be humble, You have to, you have, yeah, no doubt, yeah, you have to be humble, you have to be humble towards each other, and मतलब आप डाउन टू अर्थ हैं तो वाकई में रहें, लाइक दिल से, मतलब अंदर से आपको होना चाहिए। ये नहीं कि होना बस मैं चाहिए, मुंह पे आपके अच्छा बन रहा हूँ और पीछे से यार बोल रहा हूँ कि यार ये क्या है। yeah, 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 तो yeah, यू जस्ट हैव टू बी सिंसियर। कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। yes, जब when you start to when you're in the field, आप फेम आता है, पैसा आता है, सब कुछ चीजें होती हैं, बट you need to make sure that you stay on your ground. You have to stay on your ground. You can't just be like कि बस अब तो मैं जो हूँ बस मैं हूँ। ये मैं जो है ना, ये सबसे गलत चीज है। yeah, yeah, yeah. मैं बड़ा गलत है, सही बात। Yeah, So like when you have time, what do you do? Like, do you surf YouTube just to yeah. learn from other music? Like, so how do you come up? Like, what do you do? So if I have time, first of all, I barely get time. Yeah, And because of this previous project, I had so many projects वो होल्ड पे चले गए थे। कुछ आर्टिस्ट हैं, मैं उनको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ एल्बम्स 2-4 लोगों की प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और बाकी कुछ nice. इंडिविजुअल काम है वो भी चल रहे हैं। सो वो काफ़ी टाइम से रुक गए थे, तो नाउ आई एम डूइंग दैट, आई एम वर्किंग ऑन दैट। एंड उसके अलावा बस शोज वगैरह देख लेते हैं कुछ। आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक Oh, टू okay, like to stay in the nature. I love nature, and that's where I get my inspiration for nice. music. I don't get inspiration from artists. हाँ ठीक है, कोई आर्टिस्ट को सुनते हैं आप, अच्छा लगता है, वो Yeah, अच्छा होता है, but I don't get my musical inspirations from any of the artists. I try to get the inspiration from different fields, like कोई आर्किटेक्चर को देख के आप इंस्पायर होके आपने उस पर कुछ पीस लिख दिया, yeah, एंड yeah. आपने ट्रैवल करके कोई जगह देख ली, उस जगह को देख के, वहाँ के लोगों को देख के आपने कुछ पीस लिख दिया। So that's how I work on things. So I like to travel, I like to enjoy road trips and be in the nature, and so yeah. और थोड़ा सा अब ये है कि मतलब ज्यादा ज्यादा शोर शराबा मुझे अब शायद पसंद नहीं आता, तो अवॉइड करता हूँ मैं ज्यादा शोर शराबा भी। जी, तो जी, जी। बस अपना म्यूजिक है, म्यूजिक में ही लगे रहते हैं, आइडियाज पे काम करते रहते हैं, चीजें सीखते रहते हैं। ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ कि मैं कुछ लर्न कर सकूँ। एवरी डे आई वांट टू Mhm. लर्न समथिंग न्यू, Yeah, whether yeah, it's music or something else, but yeah, I want to keep on learning and evolving. So yeah. yeah. So like the reason I said that, like the reason I asked this question, जब भी मेरा शो होता है ना करें, literally. Mm-hmm. So about day to go to my show, I watch. So then I watch Kapil Sharma show.
that Okay. gives me so much like kind of relax for me, because of course Nice. जब भी show हो रहा होता है, it's natural, you know, you have some kind of pressure on you, right? Yeah, how everything was fine. So I Right. watch Kapil Sharma show for about hour, 2 hours, you know, gives me so much relaxation, gives me some dialogues to, you know, some joke karna, or because you know when you're doing a live show, there is no dull moment. You have to say something. नहीं तो Absolutely लोग not. समझ जाएंगे क्या. So Absolutely that's not. what I do when I have time. I learn from him. तो बड़ा अच्छा लगता है देख के सुन के, you know, so then I can bring that energy here with you Yeah, guys. that's great. तो That's great. मैं तो अभी जोक्स सुनाना शुरू करूंगा तो सब भाग जाएंगे because क्या I एक तो हो usually जाए यार. I see the problem with me is that I'm very spontaneous. If you ask me to do something, if you ask me to prepare something, I would never be able to do it. So even if I'm performing on the stage, you know, I would joke around. कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई लतीफा याद करके सुनाऊंगा. I would just create something instant, like scenario based, right? So scenario based चीजें होती हैं, and I would just make sure. I would not make sure, but everyone have a good laugh and all of that. So even a lot of my friends, they say कि अगर तुम म्यूजिक नहीं करते तो जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते. So because I like humor, I like to enjoy, I like to be happy, stay happy and stay calm and composed. Because अगर आप नेगेटिव और अगर आप उस तरह से रहेंगे, अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे, so उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी म्यूजिक पे, बहुत सारी चीजों पे. True. You need to, and plus again वही जिस तरह की सोसाइटी है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर आप उस चीज को अगर अपने ऊपर हावी कर देंगे तो फिर तो आप कर ही नहीं सकेंगे काम. So you need to have that humor element and उस तरह की चीजें, so you would watch something comedy or you have a good laugh and दोस्तों में मस्ती मजाक हो गया. Yes. तो हाँ, इस तरह से चलता रहता है. तो यार हमारे गुड फ्रेंड जो तैमूर गिलानी, ही इज वाचिंग एज वेल फ्रॉम फ्लोरिडा. ये भी हमारे जो शो करते रहते हैं. अब्दुल हमीद जीवानी है, तो उन्होंने कहा एक जोक बनता है तो इंशाल्लाह. सो वी हैव अबाउट 5-10 मिनट्स. हो सकता है कुछ आ जाए तुम्हारा. लिखना पड़ेगा जोक. लिखना पड़ेगा. तो ये करीब कराची में कहाँ रहते हो? कराची में गार्डन. अच्छा गार्डन में रहते हो. अच्छा तो गार्डन जमा खाने जाते हो? प्लैटिनम. अच्छा प्लैटिनम जाते हो. ओके, यानी वेस्ट में रहते हो. ओके. तो यार ये जो कराची में जो है, स्पेशली कराची, तो वहाँ पे हमारे सिंगर्स माशाल्लाह जो हमारी कम्युनिटी में बहुत होंगे. द वन यू नो मेंशन फ्यू नेम्स, लाइक बिकॉज़ आई हैवंट बीन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ. तो कौन जो आजकल जो अच्छा चल रहा है, लाइक आई नो नॉट नाउ, लेकिन जो अपना बिफोर पैंडेमिक के वहाँ खुशहाली में कौन वगैरह गाते थे अच्छे हमारे सिंगर्स हैं? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है. because oops हो गया ये. oops हो गया because I मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं करता कम्युनिटी इवेंट्स में. ओके. मुझे इतना आइडिया नहीं है. like I was part of the orchestra, I think back in 2007. Okay. And Golden Jubilee के टाइम पे I serve in orchestras and different orchestras. कभी कहीं पे तो कभी कहीं पे और काफी कुछ साल मैंने दिया है, सर्व किया है ऑर्केस्ट्राज में. एंड उसके बाद तो हाँ, बस खिदमत करके बस अपने हो गए. फिर ये है कि बट हाँ, एंड देन आई वाज अवे फॉर लाइक 4 years as well. I was in Dubai. एंड देन उसके बाद यही है कि अभी भी यही होता है कि मैं ज्यादा इस तरह से एक्टिव नहीं हूँ. लाइक जमाती इवेंट्स में, if there is something, if they call me for something, if there is something, I would go. I would love to happy to do my khidmat and seva. Nice. Then that मैं ज़्यादा इतना involved नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है. I'm sure there are many, because we have a lot of talent. That is for sure. Yeah. तो कोई भी गाने की 2-3 लाइन हो जाए करीम? हो सकती है. अभी जो टीजर जो है मैंने निकाला है. अरे yes, okay, yeah, you have a new song coming up. So the new song, okay, so जब ये मौला मेरा इश्क चल रहा था, तो उस दौरान मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी. एंड मैंने म्यूजिक जो है, जो कुछ भी सीखा या पढ़ा या जो भी चीजें की, वो मैंने हमेशा से इसलिए की ताकि मैं खुद कुछ कर सकूं. बट होता ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ों में आप जाते हैं ना, जब आप पढ़ना सीखते हैं, फिर ऑफ कोर्स you're trying to make it as your career, then you want to work on different things and different capacities. So I started producing. I worked with
so many. I think I've worked and produced over 100 artists, I think, easily. Oh, mashallah, mashallah. And like different countries, and different backgrounds, and पाकिस्तान में भी बहुत काम किया लोगों के साथ, and बहुत सारे shows भी किए हैं, बहुत चीजें की हैं. So during all this time, I actually forgot that why I started this, why I actually wanted to do music. I wanted to do Yeah. music for myself. So पिछले कुछ 2-2.5 सालों से I've been working on my own content, and मैंने कुछ चीज़ें नई शुरू की. पाकिस्तान में एक शो शुरू किया जिसका नाम है साउंड डायरीज. Okay. So basically that show is about storytelling of Pakistan through its sound. So वो Okay. बिल्कुल एक अलग ही प्रोजेक्ट है. सो उस दौरान फिर बहुत सारी चीज़ें होती गई. फिर अपना म्यूज़िक, मैं कॉम्पोजिशंस आपके दिमाग में आती रहती है. आप फ़ोन पे, आपने मेरे 2 फ़ोन है जिसके अंदर कोई 200-250 चीज़ें वॉइस नोट्स Wow. होंगे जिसके अंदर सारा म्यूज़िक है. तो जी. अगर मैं बनाना शुरू करूं तो आई थिंक मुझे 15-20 साल लग जाएंगे इतने गाने बनाने में. Yeah. सो बट आइडियाज़ बेसिकली मौजूद हैं. सो बट फॉर द पास्ट few time there's been a call कि बस मुझे अब अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए म्यूजिक करना है, अपनी चीजें करनी है, अपनी स्किल पे. क्योंकि इस दौरान होता ही था कि जब आप म्यूजिक में, मैं रहते हुए मैं म्यूजिक नहीं कर रहा था बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर अदर्स. तो मैं अपनी स्किल्स पे भी काम नहीं कर रहा था, बस आई वाज जस्ट वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर और अ कंपोजर फॉर अदर गाइज, फॉर अदर वॉइसेस. सो अपनी स्किल्स भी छोड़ दी थी, अपने ऊपर टाइम नहीं दिया, अपनी प्रैक्टिस पे टाइम नहीं दिया, सिंगिंग प्रैक्टिस पे, गिटार प्लेइंग पे और इन चीज़ों पे टाइम नहीं दिया दूसरी चीज़. सो बट नाउ आई एक्चुअली फॉर द पास्ट few months or so, beginning of this year कह लें आप, so I started actually working on my own things. तो अब जैसे मौला मेरा इश्क हुआ, दूसरी और चीज़ें हुई, आई थिंक ये मेरा दूसरा अभी ओरिजिनल है इस ईयर का. बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर आई हैव प्लान टू, आई एम डूइंग एन EP which will have like 4 songs. एक छोटा EP is like an extended play album, छोटी एल्बम जो होती है. So वो मैं कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ. So Nice. that is going to be me as a musician, as an artist or as a songwriter. So वो अब उन चीज़ों पे मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ. So वो पूरा जो आइडिया है वो basically it's my journey, and whatever I've been through, and whatever I've perceived, so that is going to be that. So in the meanwhile कहीं से स्टार्ट तो लेना था. सो आफ्टर मौला मेरा इश्क आई सेट डाउन, आई सेड दैट मुझे अपने लिए कोई गाना करना है फटाफट, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है. और जब आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है, जैसे अभी आप 2 हफ्ते बाद आप शो कर रहे हैं, so Yes. शायद आपको से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी या Yes. नहीं हो Yes. रही, Yes. सो तो वो यही होता है कि फिर मैंने क्या किया कि गाना लिखना शुरू किया. मुझे बहुत चैलेंजेस हुए. इनिशियली मैंने सोचा कि मैं लिरिसिस्ट को लूंगा ऑन बोर्ड, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं खुद करूंगा. और क्योंकि एक आपकी थॉट तो है ना, लाइक इफ यू हैव अ थॉट प्रोसेस, यू आर एन आर्टिस्ट, यू हैव अ थॉट प्रोसेस, यू हैव अ विजन, राइट. सो आई थॉट कि नहीं, मैं खुद से बैठ के लिखूंगा. सो आई जस्ट कट ऑफ एवरीथिंग, बस बंद करके, अपने आप को बंद करके बैठ गए, सब चीज़ें बंद कर दी, और बस पेन पेपर लेके बैठ गया और 3-4 दिन लगा के लिखे मैंने. क्योंकि वो गाना जब आप लिखते हैं तो आप फेजेस होते हैं गाने लिखने में ना, आप एक साथ बैठ के कभी भी नहीं लिख सकते, यू डू इट इन फेजेस. तो मैं 2-4 लाइनों पे फंस गया तो फंस ही गया था. फिर उसके बाद लिखते गया, चेंजेस होते गए. बट ये है कि वो कर दिया, फिर मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, एंड आई जस्ट डिड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. लिरिक्स भी खुद लिख दिए, म्यूजिक भी खुद बजा दिया, गिटार, पियानो, एवरीथिंग. So and something different, but the sound, the way I've played in it, the guitars I've played and all of that, that is actually who I am, because I like to do singer songwriter songs. I like to have like nice guitar playing in the song and all of those things. जो मेरी inspirations हैं, उस तरह की चीजें मैं करता हूँ. So तो ये बड़ा different है from मौला मेरा इश्क. It's not a Sufi song, or it's basically a romantic song, and it's about companionship, not generally किसी भी तरह की companionship पे. So that is the song. वो complete तो हो गया है, but ये कि मैंने सोचा था कि मैं उसको कल रिलीज कर दूं, but मैं एक आध दिन ठहर के कुछ चीजें फाइनलाइजिंग है कुछ, क्योंकि वो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप जब तक आप खुद से मुतमईन नहीं है, तो आप किसी और को कैसे मुतमईन कर पाएंगे? कैसे करेंगे? नो डाउट. मेरा हमेशा मैं एक कोशिश करता हूँ कि
जो मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ ना, वो लोगों तक वही पहुँचे। तो आई थिंक वो आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि द मैसेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू योर स्किल और योर आर्ट, वो आप पहुंचाएं तो उसी तरह समझ आए लोगों को और उसी तरह रिलेट करें, तो आई थिंक वो आपके लिए बोनस पॉइंट होता है। सो आई थिंक वो मैं समझता हूँ कि लाइक अल्लाह का बड़ा करम है कि जो है वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब अब लोग आपके साथ रिलेट कर पाते हैं, आपकी विजन को समझ पाते हैं और आपके साथ रेजोनेट कर पाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है हमारे लिए। So that is the song, and it's going to be out in the next couple of days. So I can try and play just a couple of lines because I don't want to Please, give away the yes, entire please. song. No, of course not. Yes, please. Our good friend जो है Reez Jadhav ji is watching as well, and everyone knows Reez. He is a so much big supporter for Yeah. all of us. And so here is a message from me, Karim, Karim Barolia, are truly a great inspiration to the global artists. Great to see you on this platform with Jalal bhai. Thank you so much, Reez bhai. Thank you so much. Good to see all your support and all your comments. Encourage us. Yeah. Here we go, guys. The new song coming up in next couple of days. Here we go. सुनो तुम सुनो कहो अब कह भी लो जो सुनना मैं चाहूं इन आँखों से, फिर तुम कहो चलो मेरे साथ चलो जहाँ कोई नहीं उस पार चलो, अगर रुक जाए हम कहीं इस पल को यूं ही थाम लो। क्या बात है, माशाल्लाह. It is a different song, correct? Yeah, it is a different song. You can say it's a romantic song as well. So I think it'll be a nice change for all of us. So can't wait for it. I think it'll be nice. Yeah, teaser is out, just a little bit, just to tease. That's it. That's it. And असल में पहले मैं रिलीज कर देता, but लास्ट वीक थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी. अभी भी my sinuses are blocked and my nose is completely blocked क्योंकि यहाँ पे वेदर का ये सारा चीजें चलती रहती है. So I was supposed to release it like a few days ago, but then तबीयत खराब हो गई तो चीजें ऊपर नीचे हो गई सारी. But ये कि now it's done, so I think we'll release it in the next days or so. इंशाल्लाह. तो यार, तो अभी आजकल जो है कराची या पाकिस्तान की हालत कैसी है अपना जो पेंडेमिक में? सो जस्ट इन जनरल. कोरोना नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है बट नहीं है. अच्छा, ठीक है. लोगों के लिए नहीं है, बट वैसे है. People don't follow anything. They just don't follow anything. There is no social distancing or anything. Nobody wears a mask. If you go to a pharmacy to buy anything, even the pharmacist is not wearing a mask. तो कोरोना है बट नहीं है. कोरोना है बट नहीं है, समझ गया मैं. Okay, so Karim, after this song, what are the future projects you're working on? Just if you share in general. I think I'm working on an EP, which is going to be something different. It will just be me, and who I am as an artist.
and this song is not part of that EP, because that song is more about journey and finding yourself and all those things. So uske alawa, I'm doing a lot of collaborations, and collaborations chal rahi hain. I'm working on some different projects, some intense work, जिसमें मैं एज अ कंपोजर और प्रोड्यूसर अपनी, क्योंकि होता है ना, जैसे मौला मेरा इश्क तू जो है वो देखा जाए तो बड़ा सिंपल कॉम्पोजिशन है, मीठी कॉम्पोजिशन है, एंड बट उसमें कुछ सेक्शंस हैं जो कि बड़े इंटेंस हुए हैं, जैसे मिड का सेक्शन है, म्यूजिकल पीस है, थोड़ा वो अच्छे हैं, बट ये है कि चूंकि वो गाने की रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिसमें मैं अपना जुनूनीपन नहीं दिखा सकता था, क्रेजीनेस एज अ कंपोजर नहीं दिखा सकता था, तो वो अब चूंकि आप एज अ म्यूजिशियन, आप जब आप काम करते हैं कंपोजर, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगेन वो रिक्वायरमेंट के आइडिया के हिसाब से आपको यू हैव टू कंपाइल ऑन दोज थिंग्स. सो अब ये है कि अब जो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ तो वो काफ़ी इंटेंस और हैवी म्यूजिक होगा, हैवी इन अ वे कि मतलब वो हैवी म्यूजिकली हैवी होगा, रिच होगा काफ़ी ज़्यादा, एंड उसमें मतलब थोड़ी सी वेरिएशंस होंगी और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होगा, फ्यूजन होगा, बट इंटेंस म्यूजिक होगा, वो नॉट सिंपल, इट्स गोइंग टू बी थोड़ा सा टेढ़ा म्यूजिक होता है ना, उस तरह की चीजें होंगी. सो अच्छा, चलो, नाइस यार. So, do you want to say anything before we finish today? Anything? Did you enjoy? मजा आया आज? कैसा लगा? आई थिंक मैंने कोई फजूल बात तो नहीं कर दी, बट पता नहीं होता ना, कभी कुछ बोल देते हैं तो समटाइम्स कोई ऐसी चीज बोल देते हैं कि किसी को बुरा लग जाता है. सो आई थिंक थैंक यू एवरीवन whoever has tuned in, and I think you're doing an amazing job, and even Riz bhai and you, both of you, I think जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से कंटेंट आप लोग लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, आई थिंक वी नीड दैट, सो कीप ऑन डूइंग दैट. एंड मैसेज यही है कि जो भी आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कर रहे हैं, दो से तीन चीजें करनी है. एक, आप उस चीज के साथ ऑनेस्ट रहें, yes. ना, जो ऑनेस्ट रहें, चाहे आप किस तरह का भी काम करते हैं, ऑनेस्ट रहें. और दूसरा ये है कि डेडिकेटेडली काम करें, ठीक है ना, उस चीज में उसको एक्सेल करें, अपने आप को चैलेंज करें और एक्सेल करें. yes. किसी के साथ कंपीट नहीं करें, किसी को ये नहीं कहें कि मुझे इससे अच्छा बनना है या जैसा बनना है. अपने आप को देखें, लर्न करें, एक्सेल करें, और कोशिश करें कि जो आप काम कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान ना हो, और आप लोगों की हेल्प करें. वी नीड दैट, वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर. दैट इज वो हमारी कम्युनिटी के बेसिस भी यही है, यू नीड टू सपोर्ट ईच अदर. ये कुछ चीजें बेसिक जनरल जो बातें होती हैं वो ही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वो मैं बिलीव करता हूँ इन बातों पे. तो मैं कोशिश यही कहता हूँ कि मैं सबसे यही कहता हूँ कि जो है वो सिंसियर रहें अपने काम के साथ, और अगर आप सोचते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो उसको कर जाएं. ये नहीं सोचे, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ट्राई एंड डू इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज ये हकीकत बात है कि जब आप कोई चीज़ करने चाहेंगे ना, अगर आप दिल से करेंगे तो वो आपको कुदरत साथ दे देगी, आपका कुदरत साथ दे देगी, नो डाउट. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको कि ऐसा होता है. मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता चीज़ें, बट बिल्कुल ऐसा ये रियलिटी है दुनिया की. क्योंकि वो जब आप जो हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, जब हम उस चीज़ को रेजोनेट करते हैं, जब वो वाइब्रेशंस बाहर जाती है, और जिस तरह की वाइब्रेशंस जो हम बाहर निकालते हैं, तो वही चीज़ हमारे पास वापस होकर आती है. अगर हम गलत सोच निकालेंगे, अगर हम नेगेटिविटी निकालेंगे, तो वो नेगेटिविटी की फॉर्म में वापस आएगी. ट्रू. पॉजिटिव सोच के साथ निकालेंगे तो वो चीजें, नेचर आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह के आप खुद हैं. सो आई थिंक चीजों पे फोकस करें और बस एक दूसरे के हेल्प करें और काम आए एक दूसरे के. I think this is a great say कि जो है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई जो है कुछ भी करे, so just जो challenge yourself and honest with yourself, that's it. Then I think everything will get easy automatically. It won't be easy, but it will be done. Because easy में मजा भी नहीं है. मजा भी नहीं है. You don't learn. And because when it's difficult, you actually learn and excel. And आप उससे फिर आगे निकलते हैं. अगर आप हर चीज if you spoon feeding, तो I think वो उस चीज का फायदा भी नहीं है. So No, I think there are apna Taimur, and there are so many people are jo hai commenting as well. Thank you so much, everyone. Karim bhai, it was an honor. It was a
Love to Thank you. be, have you on, like you on my show. बड़ा अच्छा लगा Nice. बात करके. Now we know a little bit more about you. Inshallah, we'll know जब भी आपका दूसरा गाना आएगा. I think in next couple of days we'll know even more about you, like how much romantic you are. I think एक it looks आर्टिस्ट really nice. की बहुत सारी साइड होती है और वो ही बताता है जो उसको बतानी होती है जिस टाइम जो साइड बतानी होती है. तो it's just for a change, something easy listening. This is an easy Yeah. listening song. आप सुन रहे हैं, ड्राइव करते हुए जा रहे हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं, Yeah. and all of that. So a lot of people would relate. Yeah. Yeah, and of course, guys, जो है Karim Barolia, he has his own page as well and YouTube channel. आपका YouTube channel भी है, right? Yeah. With the same name, right? Okay, yeah. So people can go. You can, of course, just subscribe his channel as well for all the videos coming up. All the projects are coming up. So thank you so much again, Karim. All the best to you and your family. Stay safe. Thank you so much. And Thank you. and hopefully आपकी लाइट जल्दी आ जाए. तो लाइट अभी तक आई नहीं है वैसे. Oh, I know. वही कह रहा हूँ. Yes. It's been over an hour now and it's still not there. And I was supposed to actually get back to work now. So, but I don't know if I can do it now. But because electricity, so system doesn't run and all of those things, right? So, let me ask you one thing. Whenever I ask Salim Merchant for to come on the show, so he always tell me he goes to sleep at 5 or 6 o'clock in the morning. So don't call me early in the morning. Then you as well, you are up every day 3 or 4, 5 o'clock. So ये music composers का क्या होता है कि they always up late, early, like late nights. Why is that? बहुत सिंपल बात है जलाल भाई. हाँ. देख, होता ये कि जब रात को दुनिया सो जाती है, सही ना, क्या होता है कि खामोशी हो जाती है. जब खामोशी हो जाती है तो आप कनेक्ट कर पाते हैं किसी ऊपर वाले से या जो भी जो इबादत समझ ले, आप जिस तरह की भी बात समझ लें. तो वो खामोशी के टाइम पे जिस तरह से आप चीज़ें कर पाते हैं ना, वो आप दिन के शोर में और खचपच और ये सब चीज़ों में नहीं कर पाते. अब इस टाइम पे परिंदे भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है. तो आप जो है वो कनेक्ट कर पाते, रिलेट कर पाते हैं. अच्छा, बट कुछ लोगों की अप्रोच है कि मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो बस वो दिन में भी सोते रहते हैं, मतलब वो बड़ा ऑफ रूटीन होता है. किसी लोगों ने बस उसको लाइफस्टाइल की तरह बना दिया है. बट आई थिंक फॉर मी इट्स नॉट अ लाइफस्टाइल. लाइक I would prefer to actually sleep early and wake up early and do my things, but because of the circumstances I am in, and फिर रात को शोर कम होता है, फिर लाइट भी होती है, but unfortunately लाइट आ गई, एसी चल गया मेरा, लाइट आ गई. तो लाइट आ चुकी है. तो वो ये होता है कि शोर जब कम आता है तो फिर आपका दिमाग चलता है और काम आता है. और ज़्यादातर मेरी सारी कॉम्पोजिशन रात के 4 बजे के टाइम पे ही बनती है. वो कनेक्टिविटी जो है उसी टाइम पर ही आता है. या तो मैं कहीं नेचर में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कहीं पहाड़ों में या पता नहीं कहीं पे, तो वहां पे आती हैं सारी चीजें. सो आई थिंक वो पीस आपको मिलता है उस टाइम में. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग अप टिल लेट नाइट. एंड मेरा तो स्लीप पैटर्न बहुत ही बुरा है. लाइक टुडे आई स्लेप्ट एट लाइक 8:30 in the morning and I woke up at 12 बजे पर उठ गया था. तो उसके बाद से बस शाम को थोड़ी सी शायद नैप ले ली और ये वो. तो हाँ, म्यूजिशियंस के साथ, आर्टिस्ट के साथ ये है, बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है हमारी, हम चाहते नहीं. I think the light just goes off again. I think you can see him. He's in dark right now. Let's see if I can add him again. No, I think he is. Looks like he's in the dark now. But anyway, so I'll just wait until he might be come back. So guys, so I think ये था आज का show. I think it was nice to talk to him, nice to meet him virtually, and good to know a lot of things about him. So make sure just watch for his new song. So it's coming up in a couple of days, and of course we'll be posting as well. I'll post as well, same as Riz Jadhav ji will post on our Diamond Jubilee group. So just keep watching or keep just stay connected. So thanks to everyone जो हम आज का जिन्होंने शो देखा, जो है कमेंट भी किया, शेयर भी किया. Thank you everyone, including Riz Jadhav, our good friend, and of course Temur, Narmeen, Gulrose, Nisha, Lata ji. There are so many people are watching everything. Thank you so much. And of course we are trying to share the message for the Arkan Development Network. So please, if you can donate or contribute anything like $1, $10, whatever. If you can donate, I think it'll be nice to
it'll be nice so we can help our brothers sisters, the one like in this difficult time. And of course, Taimur landing a message. Yeah, thank you so much, Jalal. Bye for bringing him. You're welcome, my friend. Taimur is our, I think he's coming. Oh, yo, okay, I think the Karim is back now. There we go. See. Yeah, so this is what it is. This is what I have to go through most of the time. And I think उसको जितना आप इन चीजों से चिढ़ेंगे ना, चिढ़ जाएंगे, तो वो आपको और प्रॉब्लम करेंगे. आप अगर आप उसको जिंदगी ऐसा बना लेंगे ना, you just enjoy it and then you just keep on doing things and that's it. So, that's it. Yeah. तो but यही है कि बस आप मतलब हाँ, मैं ये आपको ये बता रहा था कि बहुत मुश्किल होती है आर्टिस्ट की जिंदगी. मतलब हम चाहते नहीं है कि हम, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो रातों को नींदें खराब करके पूरी रात जाग रहा है और सो नहीं रहा. बट आई थिंक दैट्स, ये ऐसा नहीं कि कोई फैशन और ट्रेंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट that's how it is. Like you just and it's very difficult. आप बड़े क्रैंकी हो जाते हैं, पता नहीं होता. मतलब मैंने ये पिछले 3-4 महीने पेंडेमिक की वजह से मैं ज्यादा बिजी हो गया हूँ, बिकॉज आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो मतलब एक्सरसाइज करने जाता था, वो भी नहीं जा सकते, जिम बंद हो गए, सारा लाइफस्टाइल खराब हो गया. आप कुछ पता ही नहीं है, सुबह 7 बजे सो रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे नाश्ता कर रहे हैं, then you just waking up and then बस यहीं पर ही बेड है, सो गए, उठ के आके डेस्क पे काम करना शुरू कर दिया. So it's quite exciting and it's fun, but sometimes it gets boring. So मतलब आपको होता है कि बस you need a break from all of this. Like तो speaking of a breakfast, मुझे याद है कि जब भी हम कराची में थे, we used to go to लसबेला, वो पराठा चाय तो खाने के लिए अभी भी मिलता है. वहाँ पे मंजा पे बैठ के खाते थे रात को. सब जगह मिलता है अभी भी. वही ये तो वही मक्खियाँ, वही चाय और बस वही इसका जो टेस्ट है वो सारा सेम ही है. Like No, yeah, I miss those days. Yeah. So thanks, Karim. All the best to you. Thank and you your so family. much. Stay safe. Inshallah, we'll be in touch again. Or we are waiting for your new song, and we'll post and share everything on our channel as well. And yeah, so अपना आप जो आपकी family को हमारी तरफ से याली बोलना, and all the best to you. Thank you so much, and we'll be in touch again. Yeah. Yaली madad. Bye. Yalim madad. Bye-bye. So guys, ये थे one and only Karim Barolia from Karachi, Pakistan, जिन्होंने अपना मौला मेरा इश्क, तो he was the main guy. And then of course जो अपना जो project की जो lead थी Nazleen, she is from Malaysia. So inshallah we'll see you guys on Tuesday. We'll have a Salam Namaste Calgary at 6:30 Calgary time, 8:30 Eastern, and 5:30 Karachi, Pakistan time, which will be Wednesday early morning. So messages abhi bhi aaye. Thank you so much, guys. Lekin aaj raat ko there are so many things there are so many events are happening. Like tonight, make sure watch them, support our artists, including our Shehzad bhi hai. And I think there are so many other artists they are performing as well. So I think that will be on my Entertainment Canada page, and same as the Diamond Jubilee group as well. Riz Jadavji will share everything, and of course, Narmin will be sharing those as well. Thank you so much, everyone, including Melissa Parpia for the sharing as well. I know she just messaged me as well. She couldn't join, but then the people are watching. Leila, and I think there are people are watching from Karachi as well. So thank you so much, everyone. Inshallah, make sure wash your hand, stay 2 meters apart, use your mask if you are outside. I think that's how we can kind of kill this bacteria, kill this virus. आप जहाँ कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, stay safe. And we pray for we pray for your safety as well. So inshallah, next we'll see you on Tuesday. And again, there's a big announcement coming up about the future superstar next show. वो कब हो रहा है, क्या हो रहा है? So just stay tuned for like about a week or so. We'll have a big announcement coming up. There's a new comment from Leila Lassi. Yeah, now here very late night. Yes, she's watching from Karachi. Thank you so much, Leila ji. So inshallah, we'll see you on Tuesday. Love you all. Salam, namaste, sasigal, adab. And Shehzad Thobani, I think announcing everyone was sharing support. Yes, of course, Shehzad Thobani is performing tonight on one of the US Midwest page or something. Thank you so much. आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Love you all. Salam, namaste, sasigal, adab, and ya Ali madad. Thank you.